गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट. गना शॉट में आप सबका स्वागत है. टुडे we'll have an open house, and in this open house we're going to discuss two topics. The first, we're going to talk of Baluchistan on the brink, and it is on the brink. Make no mistake. And second, we're going to talk of Bangladesh, which has entered the coup zone. Very interesting topics, very relevant to India. Right. Let's go on Baluchistan beyond the brink. What's happened in Baluchistan ever since the Jafar Express attack and then the Noshki ambush? For 4-5 days, nothing happened. Zero. There was no activity, nothing. And suddenly there was a demonstration in Quetta against two or three people who were shot dead or in an encounter or enforced disappearances, which is the norm there. And Maharang Baluch went for a dharna there and she was picked up. It's been now 13th night. She was picked up, 13th, 14th night. Until now, she is in jail. No talk, nothing. And no one is allowed to meet her, whatever. So we're going to dive into this. And this is a significant thing to understand what is happening. And, it's significant to understand what is happening on many counts. Because I think the chess pieces on the Baluchistan board have moved faster than I could have imagined. And in the direction in which definitely the Pakistan army wouldn't like it to have happened. Okay, I'll start with this old saying of mine or my own, which I made. Remember, Baluchistan can survive without Pakistan. Can Pakistan survive without Baluchistan? $1 million question. The integrity of Pakistan is at stake. And towards the end of this presentation, I'll talk to you a little about what is the aggravating factor which is coming along the Indus for Pakistan or not coming along the Indus. First, Akhtar Mengal. Akhtar Mengal is probably today one of the only leader who sits on both sides of the fence. He's been a chief minister at one point. He's been part of many coalitions. He's not been all that. But today, I heard one of his podcasts. I think he's thrown his lot completely with the people of Baluchistan. I mean, his words, to quote his words, तो अभी तक अवाम ने हमें आगे किया और हम अपना रास्ता बना के चले. अभी अवाम हमें रास्ता बना दिखा रहा है, हम अवाम के पीछे जाना पड़ेगा. That's very significant. And this tweet which he put out, this is an old tweet, but I just have a look at it. I will just read the first part of it, where he says, there is not a single inch of Baluchistan left where the government can claim authority. They have lost this war completely and irreversibly. That's the operating thing, completely and irreversibly. And that coming from a person who was seen to be part of the establishment. A person who, when he was with the establishment, the Awam kicked him. When he's with the established Awam, the establishment is kicking him. वो ये है वो धोबी का कुत्ता, ना इधर का ना उधर का. Okay, what did he say? It is over. We warned them just as those before us warned them. But instead of listening, they mocked us. They dismissed our words as empty threats, while they fueled a system of oppression, looting, and bloodshed. When you loot, when you get bloodshed,
and oppression of people, you will not be forgotten. Okay? Towards the end, he says, I want to make something very clear to the federal government, to the political parties, to the judiciary, to the establishment, that is Mr. Asim Munir and company. You have brought Baluchistan to the brink of destruction with your own hands. But this time it is beyond our control and it is beyond yours as well. Finish. When a person who was part of the establishment, he is the only one through whom they could have spoken to the people, says this, there is something serious. And if you heard today's podcast on Pakistan Express, I spent an hour listening to it. You know things are not good at all. Okay. Look, like I always say, there are three movements in Baluchistan. One is the BLA BLF, then is the Baluchistan Yakjati Committee, which is led by Marang Baluch, and Gwadar Ko Hakdo Tehreek. The BLA and the BLF, they are looking for secession, independent Baluchistan and all. Not the other two. The other two still want to operate within the confines of the constitution of Pakistan, whatever it is. Good, bad or ugly. Okay? Now, what has happened now in the past few days? We know Jafar Express happened some time back. The BLA and the BLF attacked the train. Then Noshki ambush took place. People died. All that. And the Pakistan army could not retaliate. So after a week, whom they have retaliated against? Against BYC. Crackdown against BYC. All over Baluchistan, people are being picked up and thrown into jails without further question. They feel that BYC is the front face of BLA BLF. But people in Baluchistan don't feel so. People in Baluchistan feel that the BYC is still wanting to their human rights issues within Pakistan constitution. What is these human rights issues? Enforced disappearances, murder, oppression, bloodshed, looting minerals. We all know that. And what's interesting, there's not a single family in Baluchistan which has not gone through an enforced disappearance. Today, I heard, when a dead body is brought anywhere in that area and said, look, we don't know who this dead body is. There's a line of people who go there to see the dead body, to see if it is any of their relatives. ये अजीब बात है कि एक लाश के पीछे कतार लग जाता है कि भाई ये मेरा कोई है या नहीं है, कम से कम पता तो चले. That is the status. Anyway, like I said, the BLA BLF attacked the Pakistan army. Pakistan army could do nothing, so they've attacked BYC, Baloch Yakjati Committee. What will be the repercussion of this? The repercussion of this is very clear. The Baloch Yakjati Committee and the BLA BLF will join hands. It's a matter of time. They'll keep talking of Haq Do and all that, but it's a matter of time. And today, Gwadar Ka Haq Do Tehreek head, Maulana Hidayatur Rahman, he's come and said, I will mediate between Pakistan Army and BYC. But who will mediate between BLA and Pakistan Army? इसका कोई हिसाब नहीं. But the situation, in my opinion, has gone beyond the brink. What will happen beyond the brink is a matter of, we'll see. People say, look, there is an equation between Kashmir and Baluchistan, and that's what
Pakistan also sought long back. But there's a difference, and I'll show you the difference later. Just later. I mean, be patient. Right. What next? Today, Pakistan, or rather Baluchistan, has come out with the slick video. Have a look at it. This is a opinion poll or a influence battle of influence or a propaganda issue which Pakistan is losing. So far in this entire story of Baluchistan, I've not seen a slick video like this. There's a clear public opinion campaign which has started, which Pakistan army can't match. Okay. We'll look ahead. We'll look ahead at various markers of this whole story, right? So that, and look at the response which Marang Baluch gets. Why is she so popular? Look at this. Look at this here. There's a small girl. You know,
this is what a popular uprising is all about. That's what I thought I'll show it to you. Right? And this ain't going to stop. बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, and they're all part of this movement. Right? It is something. We have to understand what's happening there. Not something. You have to think of this movement now from the heart, not the head. And look, Zahid Hussain. Zahid Hussain is a guy whom I respect. He writes for Dawn regularly, and he's written this. I mean, his articles are very good to understand what's happening inside Pakistan. And he's written, what is it written? Baluchistan's festering wounds. Whatever he's written. But let me uh, uh, show to you what struck me most. He says, the latest attacks in KP and Baluchistan are a grim reminder of the existential threat to the country. Existential threat, which has re-emerged with greater ferocity than before. While the nature of the security problems in the two provinces is different, the combined effect has added to the complexity of the terrorist threat. External factors and internal instability have together compounded the challenges the state confronts. Right? He's talking of external factors, he's talking of internal instability. We'll talk of each of this, I'll touch upon this. It's an extremely alarming situation which requires strategic thinking to tackle. The most important lesson lies in the repression and denial of people's rights. People's rights have not been given to them, they've been oppressed. Today, Pakistan is approaching Baluchistan with an iron hand and treating it as a security and a terrorist problem. But the problem is something completely different because the problem is human in nature, the problem is socio-economic in nature, the problem is political in nature. It is not economic or security related, it is not geopolitics. It is a convergence or the synergy of 7 decades of not giving any leeway to these Baluch people. It's 7 decades of enforced disappearances. I cannot imagine a state. Just think that in every family there's one enforced disappearance. You don't know where the body is, you don't know when it is going to come back. You don't even know whether a person is alive or not. How can a people live like that? Okay. And then there's an important thing which this lady has raised, and she's raised it very clearly. This is what I've written here. The international community supports Palestine. Right? They said Israel is doing genocide. And Pakistan says सबसे ज़्यादा आता है in Dawn, Sean, Pakistan News, all that. Okay, but no one raises a question about what is happening in Baluchistan. I would recommend, for a change, BBC has taken out a video on Baluchistan. See it. In fact, my knowledge of Pakistan, very interesting, or Baluchistan, very interestingly came with an article about Baluchistan, which came out somewhere in about 2006-07. Then I started taking interest in Baluchistan. What's happening there? Okay, what does this lady say? So the question is very clear. Why is the world not looking at Baluchistan? Right. Let's take it further. A lot of people equate Kashmir and Baluchistan, and and in my opinion, the situation cannot be compared.
I wouldn't like to this thing. This is something from News 18, and where Colonel Dhanveer Singh, he has given a nice way of putting it across. I thought he put it across very nicely, so I thought let me show it to you and put it in his words. Yeah, I let me add one issue to you. You know, a great difference between Kashmir and Baluchistan is the Pakistan state has deprived the state of Baluchistan. Oh, well, I'm sorry, I can't help it if the audio of the video doesn't come through. Let me see if I can put it to you in some other form. Right? Okay. Now, as I was saying, the Kashmir, we have put money into Kashmir and made Kashmiris and uplifted their societal thing and everything. But in Baluchistan, it has been sucked out. They've been deprived. There are no schools. There are no health facilities. Nothing. That's the difference. The big difference between the way we've handled Baluchistan and Kashmir is this. And for that reason, Kashmir will never go out, but Baluchistan will go out. Okay, now let's look at something else, water. You know why I've shown this thing again? I always believed that the thing which will kill Pakistan is water or lack of water. पाकिस्तान में पानी का किल्लत है. Look, I mean, people must understand that in Pakistan there are 3 or 4 major problems which are going on simultaneously. One is Baluchistan. Two is Khyber Pakhtunkhwa. Three is Imran Khan's political issue. Four is the economy. Five, it has external problems with China and Iran and India and Afghanistan. Let's not forget that. And sixth, and the most important thing is water. Today, 2 of these problems are at its peak. Without water, they are going to have tremendous amount of issues. We know that, and I've said this. But have a look at the latest situation. After what I spoke last time, what has happened in, yeah. This is an article in Dawn which says Pakistan is running on empty. Bas khali hai. Right? Important things in this is
Water levels at Mangla stood at 320, its minimum operating level. इसका मतलब there's no water from Mangla Dam. Tarbela is 2 meters above its dead level. So there's no water there. Main two dams on Indus. Sindh has a 50% water shortage and Punjab is not far behind. Wheat crops at their final watering stage, no water, under yield. Sugarcane, vegetables, fruit orchards in Sindh's Nara Canal, parched. Cotton is delayed, and this is Pakistan's vital cash crop. So, what you're going to see in the next 2 months, 3 months, is this Baluchistan going out of control and the water situation going out of control. What is worse in this whole story is not that the water situation is going out of control. The issue is that the what shall I say? Uh, the 6 canals which the Fauj is making from Indus into the Cholistan desert. वैसे भी पानी नहीं है. What has Pakistan army done? They bought huge tracts of land in Cholistan desert, sold to themselves through corporates, and they're taking water there to do corporate farming. That's going to complicate things. So on one hand, water, जो वैसे भी नहीं है, is now being sucked out, and in the next 3 to 4 months, they're going to be major problems. Okay, major problems and Baluchistan, and don't forget that TTP and Khyber Pakhtunkhwa are not far behind, because in this entire period, every day there's an encounter going on in Pakistan where they're losing uniformed people, right? So in this kind of a situation, where does this whole story go? Will this map come true? Are we looking at a stage where the Baluchistan map and the Pakistan map and the India map will start appearing the way it is? That's the question. This is more of an update. There's no analysis, not a major analysis thing, but be very clear that things are bad. And is the whole situation come to a critical point or a critical mass is achieved for separation? I don't think so, personally. But the bleeding is going to be heavy. If a body bleeds heavily, it can die anytime. So let us see how the bloodletting in Baluchistan goes and what happens in the water story, which is unfolding ahead. Two major things about Pakistan. Okay, now as we are talking of other things, Bangladesh has entered the coup zone once again. You would have heard of it. In the past 3-4 days, the army chief has had to call people, the army, senior army officers, everyone, and he started talking to them. And look, he's conferring with them. We heard last week that there's a kind of a coup. Another lieutenant general tried to overthrow the whole lot and seize power. Jihadi kind of a guy with ISI help, all that. That was thwarted. But things are not stable there. The issues are now, I think, beyond just Bangladesh not liking India or that angst. I think there's the internal problems which are coming up, and we'll have to watch, right? And I'll give you my assessment at the end. Incidentally, today is a genocide day, March 25th. And there are, you see, again, I grant it to some people there who still remember the fact that the genocide started the Pakistani genocide started here in Bangladesh. And, this story
by in Daily Star is very interesting to read. It's about how the East Bengal Regiment, which is now the Bangladesh Army, which was once part of, you know, what shall I say, uh, Pakistan Army, was massacred in the center by a West Pakistan battalion, organized. They were disarmed. Their officers were killed. All this is remembered. And who helped them out then? India. There's not, I mean, I don't think they have a doubt, we have a doubt. But, you can't stop their own history from coming out, it'll come out. So this is something we need to understand, right? And I thought it is on this day that I should do something about Bangladesh and tell you what's happening latest, because for a few days I didn't talk about Bangladesh. If you saw in the past 1 week, there is an outreach to India. Why? US backers have backed off कि भाई हम पैसा नहीं देंगे आपको, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. ट्रम्प हैज सेड कि भाई देखो मोदी जी को छोड़ देता हूं, सब कुछ मोदी जी आप कर लो जो भी करना है बांग्लादेश के साथ. ओके, सो there's an outreach that Yunus wants to meet Prime Minister during at Bangkok in BIMSTEC meet. Let's see if it happens or not. We don't know. And then the same guy Tauhid, who's their equivalent to their foreign minister or the foreign advisor, he says India and Bangladesh are close neighbors. I don't know, Pakistan के साथ तो उतना नहीं. अभी क्या है, पैसा नहीं है. Tan Gopal. So all the Tan Gopals are now started gravitating towards India. There's no choice. कुछ कहीं और से मिलेगा नहीं आप इनको, कोई पैसा देगा नहीं. पाकिस्तान के पास तो अभी देख लिया आपने पाकिस्तान का हालत क्या है. वो क्या देगा, वही है, नंगे को कौन निचोड़ेगा, क्या खाएगा कौन है, जो भी है वो, दैट फेमस प्रेम चोपड़ा's dialogue. So they have now started looking at India all over again. Okay. And why? Tulsi Gabbard came here. She also reiterated what Trump has said. And she also said, Bangladesh is an issue of concern. So there's a problem with them internally. Okay. Right. So, of course, there are a lot of halchal within Bangladesh. Why has she said this? Who is she to say this? But she has said it. She came to India and said what she had to say. And she very clearly said, okay, we are not our favorite country cousins. And we have more faith in India. So she said and went. That's the sum total of the story. If Bangladesh understands this thing, they should know. And of course, they understand. That is why that outreach is coming. Okay, bhai, I want to meet you. And that chap says, no, India and Bangladesh are now good friends. Pakistan chodo. That story has started now. Okay? And of course, we'll talk of the rest of the things also. And now he's also going to China. There's a question mark whether he'll go to China. Next week he wants to go to China. So what will China give him? China is very clear. They'll roll out a red carpet treatment to him. They'll offer him everything. Remember, early last year, Sheikh Hasina went. She got nothing from China. She had to come back one day earlier. That was before the coup and all that. तो ये जब जाएगा इसको क्या मिलेगा? वो वैसे भी चाइना में प्रॉब्लम है. So whatever he gets or doesn't get, we don't know. But he's planning whatever, right? He'll get his thing. But the question mark is, will he go? If he goes, he might not come back. He might go from there only to USA. USA में कोई लेगा नहीं इसको अभी. इसको वीसा भी कैंसिल हो गया होगा. So Yunus is in a tight position, right? That's what I get the idea. And then of course Bangladesh, there is mob activity, mob violence, rapes, murders are on the increase. Absolutely lawless. Police is ineffective. The Fauj is stretched. I don't know whether the Fauj can control the situation.
Okay, amongst in all this, there's pressure on him. Now suddenly he's turned said, no, there's no ban on Awami League. But then that has led to problems in Bangladesh, right? And all these chaps, all these student leaders are up in arms. So they have gone to the Bangladesh army chief, and he said, no, nothing can happen. So gich pich ho raha hai. And there is chances of renewed violence. And so, right, look, it's on the edge again, Bangladesh. So things are not happy there. People are agitating and out on the streets. And in all this, Bangladesh army chief has come and he says they're going to be terror attack. They need to be vigilant, all that. And he's called all his senior commanders. He's called all his div commanders and he's had a conference. Whether he'll be able to control them or not, we don't know. Whether he'll do a coup or not, we don't know. Whether someone else will do a coup or not, we don't know. Whether Yunus will be kicked out or not, we don't know. Whether he'll go to China or come back, we don't know. That's the level of uncertainty in which Bangladesh is. Mob violence, a war against women, so horrible. So it's gone another level up or down, whichever way you call it. Okay. And I saw this. He says, look, this is the latest. And I don't know, I hope you can hear it. But you can see the thing. He says, we are warning the army chief if you conspire to govern the country through a dog like Shahabuddin Chupu. He's the president of Bangladesh. Hundreds and thousands of us will blow up the cantonment. ये देखो, ये- right? So you see what's happening. Things are not at all stable within Bangladesh. Anywhere, any direction it can go, right? And you know, so that's what it is. We have to be aware of what it is, how things are going to go, and what do we do? I mean, the million-dollar question to me is what do we do in Bangladesh and in Baluchistan? As far as Baluchistan is concerned, I'm very clear. We need to support them. We need to support the Baluch people. The government might not be able to do it, but we, the people of India, need to support the people of Baluchistan. Because at the end of the day, it's a human rights issue. Again, in Bangladesh, the people of India must reach out to the saner elements in Bangladesh because Bangladesh is being taken over by the street mobs. But there are so many people within Bangladesh who are okay. We need to help them. We need to help the entire system to come to a situation where all these, Jamatis and this radicals and all are weeded out. How we do that, we'll have to see. Even if it means talking to Yunus, so be it. Right? Okay. And before I leave, I just got a clip from Baluchistan, which I must show to you, and then only you'll understand what I'm talking of. Look at this. Oh, 1 minute. Sorry. Let me remove this other thing. Yeah. Now you'll see it coming up.
It's a very interesting clip. Have a look at it and with patience. Yeah. There's a water truck from. See the people power. The same thing is going back in the ulta direction. Okay, so you see how things are happening in Baluchistan. That water truck goes in one direction and is thrown back by the people. So that's the thing. Why I say Baluchistan is beyond the brink. That's why it is. Right. I finished for today. I thought I'll cover two subjects and let me see anything else, but I don't see anything. We'll talk of things tomorrow. Tomorrow I'm going to talk of the IPKF. Right. Something which we have not spoken of, but there are a lot of lessons which we can draw from IPKF, which I'm going to cover tomorrow. Right. So, okay. PM should meet this fellow per his request and convey to him that behave or get effed. Yeah, I agree with you, Shambhuji, completely. We should meet him and give him a message, by be on track. Otherwise, you're going to have, right. He says, Sumit De, Jaima from Silhet, the problem lies with us, Bengali Hindus. We need to understand the Muslim Bengali psyche for what it stands. The demographics of Hindus should be of utmost concern. I agree with you. Because I'm sure is in the back of everyone's mind in India. Yeah, don't these Bangladeshis understand that without their army there shall be no Bangladesh? Yeah, very important question you asked. But the fact, I'll ask you a counter question. What will you do with them if there's no Bangladesh? You can't integrate them into our country. You don't need so many Muslims. You don't need those people into our land. How can you this thing? Then you will have other problems. अभी तो delimitation तमिलनाडु के साथ ही दिक्कत हो रहा है. फिर अमित शाह जी को फिर इनके साथ क्या होगा? Okay. Now, okay. That's very nice. Now, what I'm going to do is I have with me Bahut Baluch, who is going to join us from Baluchistan. Okay. And I'm going to ask him what the story in Baluchistan is all about. Right. Bahut, welcome to Ghana Shot. Mubarak, and thanks a lot for joining me on Ghana Shot. How are you? You need to unmute your mic, please. You would unmute your mic. Yeah, you're still muted. Yeah, you're still muted, and I can't see it. I can see that you're still muted. Yeah, can you say something? Yeah, you're okay now. जी शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल First में class. आपकी Good. आवाज थोड़ी कट रही थी, मैं देख रहा था कि कहाँ से मसला है। ठीक. Very good. Good. Let me introduce Bahut Baloch to all our viewers in Ghana Shot. Bahut Baloch is a journalist who covers. मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है. Right? बिल्कुल आ रहा है. ये he operates from Baluchistan. He's speaking to us from within Baluchistan, and he covers the conflict which is going on in Baluchistan. And on special request, he's मेरी आवाज आ रही joined है? us. बिल्कुल आ रहा है आपका. हमारा आवाज आपके साथ तक पहुंच रहा है? हेलो, आपका आवाज आ रहा है हमारे पास. आप कुछ बोलिए. हेलो, हेलो, आपका आवाज आ रहा है? Yeah, I think it's frozen a bit. Yeah, I can hear you. Yeah, you can come. बात कीजिए आप कुछ.
1 minute, let me get on to him because he'll give us what's exactly happening in Baluchistan. He'll tell us. बहुत, can you hear me? आप सुन जी, सकते हो आपकी हमें? आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपका बिल्कुल। आवाज भी आ रहा है। थैंक यू। तो जैसे मैं बता रहा था, बहुत बलोच इज reporting on the Baluchistan conflict from within Baluchistan. I wouldn't ask him where he is from. That's not fair. So I will, आप ये बताइए बलूचिस्तान में आज के दिन क्या हो रहा है। हमें ये पता है कि डॉक्टर मारंग बलूच को शी इज बीन अरेस्टेड, किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं, बहुत जगह पे डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं, and Pakistan army is absolutely on the offensive. A lot of people have been arrested, and a lot of the Baluch Ekjati committee leaders have been arrested. Why? And while this is so, Pakistan army has not been able to do anything against BLA, who are probably got out of the area wherever they are hiding. So this is the thing which generally we know. So what is your thing and what is your take? आप बताइए कि वहाँ हो क्या रहा है? जी, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। बलूचिस्तान में मैं डायरेक्ट जो हालात है उन उसकी तरफ जाता हूँ कि आज के रोज बलूचिस्तान के कम से कम 6 से 7 अजलाएं डिस्ट्रिक्ट से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे जो दूसरे शोबों से ताल्लुक रखते हैं वो सब इसका पार्ट है, वो हिस्सा ले रहे हैं। स्लोगन्स है मारंग के हक में, जो मिसिंग पर्सन इशू है उसके हवाले से बलूचिस्तान भर में यानी एहतजाज है। अभी बिल्कुल अभी जो कराची से बिल्कुल मुत्तसिल है, कराची के साथ बलूचिस्तान का जो शहर है अब चौकी, वहां पर एक बड़े पैमाने का प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 6 रोज से बड़े पैमाने पर सिर्फ मुजाहरे हो रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की जानिब से फायरिंग हो रही है, लोग जख्मी हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है। इतनी तादाद में गिरफ्तारियां है कि उनकी पूरी डिटेल्स अभी तक नहीं मिल रही है कि कहाँ से कितने लोगों को उठाया जा रहा है। बहुत कम लोगों की अभी तक तफसीलात आ चुकी है। फिर बलोच यकजहती कमेटी की जो लीड करने वाली है डॉक्टर मारंग है, गुज़िश्ता रोज समीदीन को भी इन्होंने कराची से गिरफ्तार किया। फिर यहाँ पर आज समीदीन को जैसी बेल मिली है, एक तो है कि सेक्शन 144 लगाई गई है, जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अंग्रेजों की लाई गई एक कानून है जिसकी आज हैसियत है ही नहीं कि वो इस्तेमाल कर सके, लेकिन पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करता है। यानी किसी को भी 90 दिन के लिए वो अंदर कर सकता है। इसी तरह के कुछ मामला है कानूनी वाले से करते हैं, तो जो इसकी हैसियत नहीं समझते हैं, जो वकला है, जो दूसरे हैं, सिर्फ जो वॉइसेस है उनको खामोश करने के लिए किया जाता है। तो समीदीन को बेल मिली आज। वहां बेल मिलते ही उन पर कुछ और दफात लगाए गए हैं कि नहीं, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। कम से कम 3-4 घंटों तक वहां पर ये चलता रहा। आखिर में समीदीन को फिर से गिरफ्तार किया गया है। कल कोर्ट में पेश किया जाएगा या नहीं, वो आगे देखना है। फिर डॉक्टर मारंग के हवाले से आज उनकी बहन ने एक पोस्ट की थी। उनका यही कहना था कि कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया है कि आप उनसे मिल सकते हैं, फैमिली मेंबर्स मिल सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम 3 घंटे हमें इंतजार करवाया गया। डॉक्टर मारंग से हमें मिलने नहीं दी गई। फिर जब हम उनसे मिले, उनकी हालत बिल्कुल गैर थी। यानी एक तो खाने पीने की जो अशिया उनको फराम की जा रही थी वो मुज़िर सेहत थी, जिसके बायस मारंग बलोच और उनके साथ जो दूसरे एक्टिविस्ट बंद है एक दो, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। फिर उन पे जो कैमरे हैं नस्ब किए गए हैं, यानी मारंग ने रेजिस्ट किया है कि आप मुझे जो यहाँ पर, मैं एक पॉलिटिकल प्रिजनर हूँ, आप मुझे इस तरह जो दीगर अफराद है, जो दूसरे लोग जेल में बंद है, आप उनके साथ मुझे नहीं रख सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह करेंगे हम आपको बिल्कुल कैद तनाई में रखेंगे, यानी कोई भी वहां पर नहीं होगा, इस तरह की सजा आपको देंगे। फिर उन्होंने क्या किया है, वहां पर कैमरे नस्ब किए गए हैं। उनकी जो बहन है उनका कहना है कि मारंग की सेल के ऊपर एक कैमरा लगाया गया है कि उसको हर वक्त वॉच किया जा रहा है। फिर उनके जो वॉशरूम्स है वहां पर उनके बाहर भी ये कैमरे लगाए गए हैं। फिर उनको जो फैमिली मेंबर्स है उनको मिलने नहीं दी जा रही है। अच्छा,
इसके अलावा बलूचिस्तान के जो दूसरे इलाके हैं वहां पर प्रोटेस्ट का बिल्कुल दबदबा है। हर इलाके में एहतजाज हो रहे हैं, मारंग के हक में, समीतीन के हक में, फिर जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस की इशू है इस हवाले से। देखिए जो कुछ पिछले एक हफ्ते से हो रहा है, 5-6 दिनों से, ये सब इसी हवाले से है कि डॉक्टर मारंग एक लीड कर रही थी एक प्रोटेस्ट को मिसिंग पर्सनस के इशू के हवाले से। फिर उनकी जो एक मेंबर है उनको उठाया गया था, रात की तारीकी में मिसिंग किया गया था, फिर उनको थाने में पेश किया गया। बीबर बलोच पैरालाइज रहे, वो चल फिर नहीं सकता है। 2009 में एक ग्रेनेड हमले में जो बलोच कल्चर डे पर एक हमला किया गया था, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो यहाँ पर मिलिशिया है उनकी जानिब से, तो उसमें जख्मी हुए थे, फिर वो कासिर हो गए, वो चल फिर नहीं सकते, उनको उठाया गया है, उनको लापता रखा गया। फिर उन पे मुख्तलिफ इसी तरह के केसेस वगैरह लगाए गए हैं। उन उस एहतजाज की वो लीड कर रहे थे कि उन पर हमला हुआ, फायरिंग, आंसू गैस शेलिंग, वहां पर 3 नौजवान जो है वो जाबाक हुए। बाकी डॉक्टर मारंग ने इन्हीं के साथ धरना दिया था, जो कुछ वहां से चलता रहा है। तो ये सीधा सीधा चीजें थे कि जो मैंने मुख्तसर करके आपको बता दी कि बलूचिस्तान में आज ये सब कुछ चल रहा है आज के दिन। राइट। आपने अच्छी तरीके से बता दिया कि आज के दिन ऐसे चल रहा है। मेरा राय ये है कि ये जो भी हो रहा है मारंग बलूच जी के विपरीत, या पूरा भारत बलूच यकजहती मूवमेंट के विपरीत, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी क्या है कि वो बीएलए के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, तो वो इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये हमारा सोच विचार सही है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही है। देखिए जाफर एक्सप्रेस का जो हमला हुआ था, बलोच लिबरेशन आर्मी ने तारीखी जो हमला किया था, जिसमें एक ट्रेन को हाईजैक करना, फिर ट्रेन में फौजी एहलकार की मौजूदगी, 100-200 से ज्यादा एहलकारों की, वहां पर उनको मार पड़ी है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मार पड़ी है। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा रूल ऑफ द गेम्स चेंज, यानी जो है तब्दील हो चुके हैं। अभी इसी पे तज्जिए कर रहे थे लोग, हमें पूछ रहे थे एज ए जर्नलिस्ट कि आप कैसे देखते हैं। देखिए हम तो यही कह रहे थे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन वगैरह इस तरह की तैयारी शायद करेगी, लेकिन बलूचिस्तान में तो ऑपरेशन पिछले 70 सालों से हो रहे हैं, मुख्तलिफ शिक्लों से हो रहे हैं। लेकिन इसका उन्होंने माना यही निकाला कि हम बलोच खवातीन हैं जो कि एक्टिविस्ट है, खासकर उन पर जो उनको बंद करेंगी, तशद्दुद करेंगी, सड़कों पर घसीटेंगी, तो इससे बिल्कुल आम बंदे से अभी आप पूछिए, वो यही कहेगा कि पाकिस्तान फौज ने वहां पर मार खाई, इसी वजह से अपना गुस्सा है, अपना फ्रस्ट्रेशन है, वो आम खवातीन बच्चों पर निकाल रहे हैं जो सिर्फ अपने राइट्स की बात करते हैं। वो आज समीदीन ने वो जो है अदालत के आते में यही कहा कि हम कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर हम अपनी डिमांड्स रखते हैं। हम तो यही कहते हैं कि जिस बंदे को आप ले जा चुके हैं, मिसिंग कर चुके हैं, उसको कानून के तहत लाए, अपनी अदालत में पेश करे, वो यहाँ पर उसका केस चला, कुछ साबित होता है, फिर वही उसी तरह देखेंगे। लेकिन इस तरह आप लोगों को ले जाते हैं, मारते हैं, फेंकते हैं। तो बेसिकली बलोच यकजहती कमेटी का यही यही डिमांड्स है कि लोगों को उठाना बंद करो, उनकी मसख शुदा लाशें फेंकना बंद करो, लोगों को वीरानों में या कि बगैर किसी शनाख्त के उनकी दफन करना बंद करे, यही उनकी डिमांड्स रहे हैं। तो बलूचिस्तान में पिछले दिनों से यही कुछ है कि कोयटा में उन पे क्रैकडाउन किया जाता है, फायरिंग, आंसू गैस शेलिंग, लोगों को मारते हैं। कल भी एक नौजवान फायरिंग से जख्मी हुआ है। यानी जो फायरिंग से सिर्फ जख्मी है उनकी बहुत बड़ी तादाद है। बाकी तो आप छोड़े कि लाठी चार्ज वगैरह होती हैं। कल हाँ, फिर वहां पर कराची में भी यही हुआ, दालबंदी में, तुरबत में 2 नौजवान फायरिंग से जख्मी हुए। अब चौकी में यही यही मामला था। तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कि आप मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता हूँ कि आज भी कलात डिस्ट्रिक्ट में इन पर एक आईईडी हमला हुआ है, जिसमें कम अज कम इनकी 10 एहलकार अला किया के जख्मी हुए हैं। यानी नुकसान ठीक ठाक उनके हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल इसको बताते ही नहीं कि हम पर कोई बम धमाका हुआ है, हमारे कितने बंदे मारे गए हैं या कि जख्मी है। गुज़िश्ता रोज बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसी इलाके में, कलात के इलाके में, उनके फौजियों को मारा, उनका असला भी कब्जे में लिया, उनके जो इक्विपमेंट्स वगैरह थे, वीडियो शायद आपने भी देखी हो कि उन्होंने शाया भी की,
कि इन फौजी एहलकारों को मारा है, इनका असला भी जब्त कर चुके हैं। यानी बैटल फील्ड पे आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं, फिर खवातीन और बच्चों पे अपना जुल्म दिखाते हैं। गो के बलूचिस्तान में एक नई बात नहीं है कि बलूच खवातीन पर कोई जुल्म हो रहा है, बच्चों पर जुल्म हो रहा है, उन पे लाठियां बरसाई जा रही है, गोलियां। ये इन सब से बलोच गुजर चुके हैं, बहुत पहले से गुजर चुके हैं, सफर कर चुके हैं। जो फैमिलीज है प्रोटेस्ट करते हैं, जिनके लोग 15 सालों से 14 सालों से मिसिंग है, वो इन चीजों से गुजर चुके हैं, वो इनको फेस करना अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल ये एक ताज़ा वाकया है, इस पर डिस्कशन चल रही है, लोग इसको देख रहे हैं। फिर मारंग बलोच आज रिकॉग्नाइज की जा चुकी है कि दुनिया भर में एक जद्दोजहद की अलामत है। उनको इसी तरीके से देखा जाता है, इसी शक्ल में। सम्मिदीन भी जानते हैं उनको, बाहर ममालिक में बाकायदा बुलाया जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं कि आप इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाती रही है। सम्मिदीन बलोच की के वालिद गुज़िश्ता 15 सालों से लापता है, डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच, उनके हवाले से पहले निकले थे। तो ये फेसेस है कि जिनको पाकिस्तान ने आज पाबंद सलासल किया है। राइट। मेरा एक सवाल है, अभी तक जो बलूच एकजुटी कमेटी और मारंग बलूच की जो मूवमेंट है, वो अभी तक जैसे आपने बताया पाकिस्तान की आइन के मुताबिक ही चल रहा है, आइन के दायरे के अंदर ही चल रहा है। और एक दूसरी ओर बीएलए चाहता है कि एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान हो और पाकिस्तान का हिस्सा ना रहे। क्या ये इस हालात में और जिस तरीके से पाकिस्तान सलूक कर रहा है, ये क्या हालात बदल सकता है आगे? क्या देख रहे हो, देख सकते हो आप, या क्या हो सकता है आगे? क्योंकि एक चीज तो बड़ा क्लियर है कि बलूचिस्तान के अवाम जो है वो बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ रहें। ये मेरा जी हमारा देखिए, अंदेशा है। या तो ये जी आगे जाएगा कहाँ, जी आपके बिल्कुल। अंदाज? पहले तो इस बात पे आते हैं कि जो बलोच इकलियती कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर डिमांड्स उनकी, ये एक तरीके से उनके लोग कहते हैं कि बलोच पुरअमन जो है तरीके से हकूक नहीं मानते हैं, अपनी जो डिमांड्स नहीं रखते हैं। तो फिर खवातीन और बच्चे अक्सरियत इनमें यही है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं। यहाँ बलूचिस्तान में बहुत पहले से इस चीज को रद्द किया जा चुका है, रिजेक्ट किया जा चुका है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में हकूक हासिल नहीं किए जा सकते हैं। नवाब मरी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते हैं कि हम पार्लियामेंट में जाए, वो जा चुके थे। जो बहुत बात जा चुके हो। हाँ, 70s के जो दाई में वो जा चुके हैं, उनकी हुकूमत थी। फिर किस तरह उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, केसेस लगाए गए मुख्तलिफ तरीकों से। जो हमारे अकाबरीन थे, सरदार अताउल्ला मेंगल, नवाब खैर बख्शमरी, जो दूसरे थे, उन सबको इन चीज़ों से गुजर चुके थे। बलूचिस्तान में यही कहा जाता है कि पार्लियामेंट में बिल्कुल हकूक हासिल नहीं की जा सकती है। सिर्फ वही लोग जाते हैं जो जिनके अलग मुफादात होते हैं। यहाँ पर इलेक्शंस भी नहीं होते हैं, यहाँ सिलेक्शन होती है। इस बार तो बिल्कुल अलग तरीके से सिलेक्शन हुई है बलूचिस्तान में। फार्म 45 47 इस तरह का कुछ हाँ, सिलेक्शन वो हुआ तो है। पूरा पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम था कि वो जी जी, ये तो पूरा बिल्कुल। पाकिस्तान में ही सिलेक्शन हुआ है, एक सिर्फ बलूचिस्तान में ही, पूरा पाकिस्तान में ही सिलेक्शन हुआ है। वो जी जी, कोई तो इट वाज नॉट अ इलेक्शन बाय एनी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। बट खैर पाकिस्तान में तो ये रिवाज रहा है, और बलूचिस्तान में खास करके ये है क्योंकि आपके पिछले अगर आप देखेंगे तो 70 साल में मेरे ख्याल में जमहूरियत, एक्चुअली जमहूरियत पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर 10 एक साल रहा है, उससे ज्यादा नहीं। एंड फॉर द पास्ट 15-20 years तो यू आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान का जैसे आपका मेरे ख्याल में आपके एमएनएस जो है वो 20-21 हैं पूरे पाकिस्तान असेंबली में। तो पॉलिटिकली यू डोंट हैव अ से, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल्स बलूचिस्तान। तो बिल्कुल। तो हमारा मेरा ये इसी वजह से ये व्यू है कि ये टूटने वाला है। आपका क्या व्यू है ये बताइए, या आम जनता का क्या व्यू है?
देखिए, बलूचिस्तान में जो हालात है, आप देख चुके हैं कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला होता है, नूश की, फिर पिछले साल बड़ी नौयत के मैं अमलों का कह रहा हूँ। अभी तो खलात का मैंने 2 अमलों का ज़िक्र किया, शायद किसी को मालूम भी ना हो कि वो इस तरह के हमले भी होते हैं कि उनके हथियारों पर कब्ज़ा करते हैं, उनके कैंप्स पर कब्ज़ा करते हैं। बलूचिस्तान में जो बड़े हमले हुए हैं सिर्फ़ गुज़िश्ता 2 सालों में या इस साल, तो बहुत सी तब्दीलियां देखने में आई हैं कि बलोच जो मिलिटेंट्स हैं उनकी स्ट्रेटजीज तब्दील हो चुकी हैं, उनके तरीक़ेकार तब्दील हो चुके हैं, उनके पॉलिसीज चेंज हो चुके हैं। पॉलिसीज यानी आज़ादी के हवाले से उन्होंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं कि किस तरह में लेनी है। तो डिपेंड करता है उन्हीं पर कि वो कितने खुद को मुनज़्ज़िम करते हैं, किस तरह इस चीज़ को ले जाते हैं। इसी नौयत के हमले वगैरह करते रहते हैं। लाज़िम एक स्टेट के साथ जो गोरिल्ला वारफेयर वगैरह के उसके कुछ अपनी होते हैं चीज़ें। तो अभी तक इनमें डेवलपमेंट देखने में आई है। रोज़ बरोज़ इसमें ज़्यादती देखने में आई है हमलों में। फिर पॉलिटिकल हवाले से जो कुछ हो रहा है कि आज लोग निकले हैं इतने बड़े पैमाने पर, शायद कल नहीं निकले थे। वो ये सब इसी जंग के असरात है कि लोग इतने बड़े पैमाने पर निकलते हैं, एहतिजाज वगैरह करते हैं। वो देखते हैं कि हम हमारे लोग जा रहे हैं, फिदायीन बन रहे हैं, बीएलए मजीद ब्रिगेड का हिस्सा बन रहे हैं, खवातीन ब्रिगेड का हिस्सा बन रहे हैं, तो फिर हम लाठियां कैसे नहीं खा सकते हैं। तो इसी वजह से जो शिफ्ट आई है पूरे बलोच तहरीक में जंग के हवाले से। बाकी डिपेंड मैं बहुत सी जगहों पर मुझे पूछा जाता है, मैं यही कहता हूँ ये डिपेंड करता है बलोच की जो लीडरशिप है, वो बीएलए हो या कि दूसरे हो या कि पॉलिटिकल हवाले से जो मास पार्टीज है जो ग्राउंड पर पॉलिटिक्स करते हैं, उन पे डिपेंड करता है कैसे ले जाते हैं इन चीज़ों को। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, माशी हवाले से बिल्कुल तबाह हो चुकी है। ये सिर्फ कर्जों पे चल रही, ना सिर्फ आज बल्कि कई सालों से कर्जों पर चल रही है। चाइना के कर्जे आप देखिए, दूसरे ममालिक के देखिए, फिर कई पर इन पे खैरात के हवाले से दी जाती है कि मदद के नाम पर, तो सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। बाकी बलूचिस्तान के जो कुछ है लूट रहे हैं, चाइना के पास जा रहे हैं, उनको बेनिफिट्स है कि मीन्स यहाँ पर शो कुछ और किया जाता है कि इतने वसाइल ले जाए गए हैं, लेकिन ले जाया जाता है बहुत ज्यादा। तो ये पाकिस्तान टूटने के बिल्कुल गगर पर है। अब अभी डिपेंड करता है जो इसको तोड़ना चाहते हैं या कि अलग होना चाहते हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो खुद को कितना मुनज़्ज़म करते हैं, कैसे ले जाते हैं चीज़ों को। चाहे वो बलूच है, सिंधी हैं, पख्तून हैं, या कि यहाँ तक कि जो कश्मीर के लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, वो भी बेजार दिखाई देते हैं। वो उन पे डिपेंड करता है कि खुद को कितना मजबूत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली तो सिर्फ फौज का है, पंजाब का है, फिर फौज का है। फौज इनको आसानी से जाने नहीं देगी कि इतने बड़े सोने की चिड़िया बलूचिस्तान को मैं कैसे आसानी से जाने दूं। इसके लिए तो इनको रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी, जो कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ तब्दीलियां देखने में आई है, खासकर जो इस फेज में है, पांचवा जो हम लोग कहते हैं कि बलोच इंसर्जेंसी का पांचवा फेज है। इसमें खासकर इस 6-7 सालों में बहुत बड़ी तब्दीलियां देखने में आई है। हो सकता है इनके जो चीजें मुनज़्ज़िम होंगी, दूर नहीं है कि वो अपने जो उनके मकासद हैं और डिमांड्स है या कि चाहते हैं आज़ादी या कि दूसरे, वो हासिल कर सकते हैं। राइट, थैंक्स अ लॉट। बहुत आई एम ऑनर्ड एंड ग्लैड दैट यू मेड, आपके पास वक्त मिला वहां से ये जोड़ने के लिए। ये पहली बार आप आए हो, आपको ज्यादा हम वक्त नहीं लेंगे। हमारा एक सवाल है, हम बलूच लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं, किस तरीके से अवाम के साथ हम मेल मिलाप कर सकते हैं, ये बताइए। क्योंकि हमारे जितने व्यूअर्स हैं हमारे चैनल में और भारत में, हम सब यही चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को किस तरीके से मदद पहुंचाया जाए। और क्योंकि हम ये भी सोचते हैं कि डायरेक्ट मदद पहुंचाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। पर किस तरीके से मदद पहुंचाना है आप बताइए, हम उसका कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आप लोग चाहते हो एक चैनल ओपन कर सकते हैं, तो ये आप खबर देखिए, ले जाइए आप। बलूचों का डिमांड दुनिया से डिमांड का या कि गुजारिश यही रही है
कि जिस हवाले से यानी कोई मीडिया में है, मीडिया पर हमारे लिए आवाज उठाए, कोई दूसरे हैं पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन की कुछ पहुंच हो सकती है, कहीं पर जा सकते हैं, कोई यूएन तक जा सकता है, कोई दूसरे फोरम पर जा सकते हैं, हमारे लिए आवाज उठाए। सबसे बड़ी उनकी यही मांग रही है कि हमारे लिए जो हम कहते हैं कि अखलाकी हवाले से कम बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, इन पर बात की जाए, इनको हाईलाइट किया जाए, दुनिया के सामने रखा जाए। वो बरमला कह चुके हैं, न सिर्फ इंडिया बल्कि जो भी है, जिस दुनिया के जिस कोने से भी है, कोई मुल्क है, कोई कौम है, हमारे लिए वो आते हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं कि हमारी जिस हवाले से वो मदद करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक कमजोर यानी खड़ी है, जंग लड़ रहे हैं, लाजिम है, पाकिस्तान के पास इतने बड़े वसाइल वगैरह जो कुछ भी है, कर्जे ले रहा है, मांग रहा है, कोई उसको मदद कर रहा है, लेकिन वो खुद को चला रहा है। बनिस्बत जो बलोच कौम है उसके पास वसाइल, उसके यही अवाम है जो रेजिस्ट कर रहे हैं, जो खुद जो चीजें मैनेज कर रहे हैं कि लाजिम है, जंग में और भी चीजों की जरूरियात होती हैं। तो उनका यही बेसिक है कि आप जहां पर भी है, किसी भी शोबे से, कोई मीडिया में है, कोई लिख सकता है, कोई पढ़ सकता है, कोई मतलब बात हमारे लिए करे, यही हमारी सबसे बड़ी मदद होगी। थैंक्स अ लॉट। बहुत नमस्कार आपको और आपके पूरे लोगों को। वहाँ हौसला रखिए, हम आपके साथ हैं। और जब भी आप एक चैनल चाहते हो कि जिस माध्यम से आप दुनिया को खबर पहुंचाना चाहते हो, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपका चैनल, हमारा चैनल आपके लिए खोल देंगे। और बहुत इससे ज्यादा अगर और आपको कुछ और कहना है तो कह लीजिए, नहीं तो हम अपना शो को बंद करेंगे अभी। जी, बहुत शुक्रिया। फिर कभी आपसे एक तफसीली करेंगे। असल में आज मैं भी थोड़ा लेट आपको ज्वाइन कर सका। नहीं, फिर कोई किसी नहीं, हम थैंक यू। आप लेट हो तो कोई नहीं, आपने ज्वाइन किया। जो भी हमने आज पहले भी बलूचिस्तान के बारे में बात किया और आपके साथ जो हम अभी बात कर रहे हैं, वो सब हम जोड़ के कल एक नया वीडियो आउट करेंगे, ताकि आप सब लोगों को, आपके लोगों को पता चले कि हमारा क्या विचार है बलूचिस्तान के बारे में। जी थैंक यू। जी, मैं आपको अभी आउट कर देता हूँ। इनका सवाल है, बाकी उन चीजों के ऊपर भी हमारा शो चलता रहता है। मैं इनका सवाल ले लेता हूँ। थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद और जय बालूचिस्तान। Right. So you heard all that. So I thought that was a thing. You can ask your questions, and look, Akash has this thing. Timeline for suppression of Baluch is expired, and Baluch know this. External support would be required. That's he said so, in as many words, right? Okay. What are the other questions which you had? Hmm. Right. Okay, will China safeguard the 62 billion CPC investment in Baluchistan? I doubt. I don't know. Knowing the Chinese, they'll start dealing with Baluch people, and the Baluch people might deal with the Chinese. They've done that earlier. I don't know where it went. So don't be surprised if there is a dealing between them. Right. One more problem with the Baluch is that, like any tribal area, they're all full of tribes. They're a conglomeration of tribes. How much internal unity they'll get, we don't know. But the BYC and BLA, they both put together have cut through tribal lines. Let's see how it goes. A listener from Himalayan foothills, my pranam to you, sir. Love to understand, get updated on our geographical neighbors, especially naughty ones. Through you, a pleasure to listen to you, sir. Thank you. Thanks a lot. Right. And yeah, can these groups, guerrilla tactics overcome Pakistan Army's technological superiority in Baluchistan? Can they ever have free Baluchistan? I think that will go there. That's my own view. Pakistan's time is limited. It doesn't have money. You heard him what he said. And Pakistan Army is not good at counterinsurgency. They are creating a major humanitarian crisis for themselves. When the humanitarian crisis and the military crisis overlap, they had it. That's my view. Okay.
Yeah, it's Baluchistan and its people have suffered a lot at the hands of Pakistan. It's time now to intervene and correct this transgressions. Can it, can this be done in the near future? I don't think our government will be able to do it. Let me be very honest with you. I don't think our government has got that kind of a mindset. But though it should be done, but a lot of things can be done back channel. Like I always say, we should support the Baluchistan cause just like the way Parvez Musharraf supported Kashmir cause. Period. Shritik, I was inactive as I was at SSB, got conferenced out third time, sir. Now only JAG entry left. Will I be allowed to shift to some combat arm from JAG? Asking you, no, I don't think so. If you go on in a particular entry, you can't get an inter-arm transfer. But never know, you try. There's no harm in trying. Okay. Yeah, I'm sorry for the sound. I think that's a technical glitch. I could do nothing. I can do nothing about it because I could hear the sound. Right. You're asking, okay, you're a Tamilian. Why is DMK spreading misinformation about delimitation? Government has said it will be pro rata, so no increase or decrease. I feel they are softcore secessionist views. No, it's not. Let me explain to you. The fear in Tamil Nadu and in all southern states is very simple. This, the southern states have controlled population. The southern states have progressed. They contribute more to the exchequer than the north. Now, having done the good things, all southern states, including Maharashtra. Now you're looking at states which have increased their population are economically lagging behind. There's a feeling that in not only Tamil Nadu, in virtually all southern states, that we are paying for the northern states instead of they being, in the view. I'm telling you a view, not my view. That instead of punishing them for they being, not doing the right thing, they're not progressing. So why should we pay for them? They should pay for themselves. But that's not the way I look. Unless you help that weaker state to rise and progress, they all can't. So that's the fear that you're robbing someone who's done well and giving someone who's not done well. Okay, that is the thing. And add to that, you brought in this Hindi story. Now let me tell you something about this Hindi story. I've lived through the anti-Hindi riots, 60s. I was a young boy, but I know what happened because it happened next to my house. I've seen it. Tamil Nadu then really hated Hindi. I used to go to Kendriya Vidyalaya because my father sent me to Kendriya Vidyalaya. I used to be said, look, you are a chap who's going to Hindi school. Stop going. This is what I used to be told when I used to go to school. Hindi school, Kendriya Vidyalaya. It was hardly. Now, if you did higher secondary in those days, you wouldn't get a seat in any college here. We've gone through that. That's why I joined. I tried IIT, I tried marine engineering, I tried NDA, and I got through NDA and I went. I didn't get a seat anywhere in Tamil Nadu. Why? Because I am from central government, my central school with a higher secondary certificate and with Hindi. That was the state then, but things have changed. Those days you couldn't get North Indian food anywhere in Tamil Nadu. Very few places you could get. But today things have changed completely. You find ladies going in salwar kameez or kurta pajamas, adlib, anywhere. 70% of the ladies, Tamil ladies, wear kurta pajama. They don't. You go, you see anywhere paneer masala being served, tandoori chicken, or North Indian, South Indian, सब मिलता है यहाँ. पिक्चर भी देखते हो उन दोनों में you can't see Hindi pictures. Things have changed, and things have changed naturally, which is good.
You find, in the station, Hindi में भी लिखा है. Yesterday I went to the police headquarters for a personal case of mine. So they're talking of Bharatiya Nyaya Sanhita. Armed policemen who don't know Hindi at all. They mention it in their manner, but that's how it is. So things have changed. Now in this change, the central government like a monkey comes and does, "Hey, bhai, aap Hindi bhi सीखो, जबरदस्ती." तो प्रॉब्लम होता ही है ना. फिर ये उसने इसको भड़का, इसने उसको भड़काया, फिर डिलिमिटेशन है, ये है, वो है. इसमें दोनों का गलती है ना. मैं ये तमिलनाडु के पक्ष में हूं ना मैं सेंटर के पक्ष में हूं. मैं एक आम आदमी हूं. संतुलन रख के मैं हिंदी में बात कर रहा हूं. आई नो तमिल ऑल्सो. तमिल ಕೂಡ पैसे तेरी होने. अगर आप देखोगे तो बात प्रॉब्लम ये है कि इट इज, आई थिंक द सेंटर नीड्स टू टेक अ स्टेप बैक. हर वक्त ना बड़ा भाई जो है ना छोटा भाई को संभालता है. ठीक. So center has to be little large hearted about it. Yeah. Bipartisan bill in Congress to sanction Munir and others for torture, imprisonment, and political figures, including Imran. Why US softly in favor of Imran when US plays dirty games? Okay. You never trust US on this. I don't trust US on this. They will not do anything because they won't upset Pakistan beyond a point. वो पाकिस्तान के पीछे आ जाएंगे वापस. Yeah. If the Pakistan army mobilizes westward, there is also a possibility of a mutiny as this mobilization is sustainable. Yeah, that's probable. I mean, I wouldn't be surprised if something happens in Pakistan army. Look, that whole place is unstable. Why are our recent army chiefs been so subdued? They don't have the same aura or fear factor like Manek Shah, VK Singh or Rawat. No, I don't think they've been subdued. Manek Shah, VK Singh and Rawat were different personalities. The others are different personalities. They're not fools. And I've known all of them, a lot of them. I've known General VK Singh also. Everyone has his personality. It's a matter of personality. Don't, right? Yeah, should we take it literally? Words of Trump, not USA, I leave Bangladesh. I think so. It's not literal, it's a fact. Even the Chinese are saying this, incidentally. The Chinese are also saying, they also accepted the fact that, look, hereafter they have to handle Bangladesh with India in the background. So it's not, yeah, Nanga nahayega kya nichodogya kya. Yeah, thanks a lot. Why doesn't Bangladesh just go away? They could all pack their bags and go to Canada. Surely, Yunus. That's a good joke. What steps are required to secure partner? Yeah, this is something which we need to think of. We have to be innovative. I don't think India can do it. I think it will require USA to do this business. Right? That's how it is. Hasina ji return to Bangladesh amid the current political turmoil? And will India provide diplomatic and strategic support to facilitate a safe return and potential reassumption of power? I don't think we have come to that stage. Look, the good thing is for the past, say, 1 month, no one is asking for our extradition back. That's gone. Let them look at, they have their own problems. Let something come out. Well, like I said, Bangladesh is in a tight position at this point of time, very unstable. Yeah. Oh, it's a very good and detailed analysis. Thanks a lot. If you liked all this, press the like button and do subscribe for all those of you who've seeing for the first time.
What I'll do tomorrow is what presentation I gave on Bangladesh, Baluchistan, and what we've spoken with the SAP Bahut Baluch. I'll put it together and chop it and put out a video separately. Why is UN blind on Baluchistan? UN is blind. That's it. UN is a blind organization. It's a defunct organization, right? And I think this is something which we have to start taking up. But for Nehru's neutral policies, southern states would not have industrialized the way they have. Even opposition leaders supported, stating, "Yeah, I think so." Uh, Look, the time at that time, things moved in India were far different from what it is today. I think you're right. 1972, Indian Army stolen all arms and industrial machineries from Bangladesh. Talk about. I think that's the most foolish thing one can think of. Okay, this is just not. Bangladesh had nothing. East Pakistan had nothing. What arms did you have? Nothing. Okay, we in fact gave you arms. If you don't know, incidentally, the Mukti Fauj initially it was, and then it was Mukti Bahini, was armed by India. Okay, it's the other way around. So I think you should start thinking differently. Fine. We've done with the presentations. I've done with all the questions. I'd like to thank Mr. Shambhu Singh for having joined us. Thank you. Good evening and Jai Hind to all of you. Tomorrow we'll talk of IPKF operations in Sri Lanka. Till then, Jai Hind.